very warm welcome, students. How are you all doing? Yes. कैसे हैं आप लोग? A very warm welcome first of all to the official YouTube channel of Goprep for Grade 8. So yes, today we are going to learn about reproduction in animals के जितने भी हमारे आगे वाले topics हैं उनको थोड़ा सा आज हम cover करेंगे. So this is going to be a part 2 for all of you. So I hope you all were present in the first part of this chapter where I taught you some of the concepts for the first part. So now we can start with the second part and we will be covering some other topics. So I hope you all are excited for today's session and let's get into the session without wasting much time. Okay, yes. Hi all. Hello everybody. कैसे हैं आप लोग? Hi Tanu. Okay. Yes, Rajan is also here. Nishita. Everybody. Hello. Hello. Okay. So students, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि exactly reproduction क्या है, ठीक है? तो ये लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था. एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड माय वीडियो येट, अगर आपने लास्ट लेक्चर जो है मेरा नहीं अटेंड किया था तो यू कैन डू री वॉच दैट वीडियो, ठीक है? सो दिस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स. सो फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड वेयर वी डिस्कस्ड अबाउट the two different modes of reproduction and आज हम सिर्फ और सिर्फ sexual reproduction के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हम कवर करने वाले हैं आपके जितने भी रिप्रोडक्शन के अंदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट टुडे. ऑब्वियसली मेंटी होगा, मेंटी हर बार होता है, सो मेंटी इज गोइंग टू बी देयर टुडे एज वेल. ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द चैप्टर. Alright, are you all excited? Shall we start with the chapter now? Give a thumbs up फटाफट से. Alright. तो देखो बच्चे, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक नॉर्मल प्रोसेस है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो देखा जाता है. एंड दिस इज अ प्रोसेस वेयर द न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड, द न्यू यंग वंस आर प्रोड्यूस्ड एंड दीज यंग वंस, ये जो यंग वंस होते हैं एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, ठीक है? So now what do I mean by exactly? Exactly का मतलब है कि फीचर सिमिलर होते हैं. आप देखो डॉग का बेबी डॉग की तरह दिखता है, कैट की तरह नहीं दिखता. So you can identify the offsprings by their outer appearances, ठीक है? And इन्हीं outer appearances को हम morphology कहते हैं, ठीक है? तो काफी हद तक रिप्रोडक्शन के अंदर जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं दे हैव अ सिमिलर मॉर्फोलॉजी टू देयर पेरेंट्स. ओके, यस, हाय, हेलो अनिकेश, कैसे हो बच्चे? ओके, ग्रेट. सो लेट मी प्रोसीड नाउ, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही क्रूशियल टॉपिक, दैट इज द रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फाइन, ओके, ग्रेट. लेट्स प्रोसीड नाउ. तो रिप्रोडक्शन अगर आप लोगों ने अभी तक इसकी डेफिनेशन नोट नहीं की है तो यू कैन नोट इट डाउन समवेयर. एंड इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्व्स. ओके, ग्रेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी की थी, आज मैं फटाफट से इसको भी आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ. So yes, the differences between the asexual and sexual mode of reproduction is that in the asexual, single parent is involved, whereas in the sexual reproduction, there can be just one parent. And ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कैसे one parent, because there are certain organisms which are hermaphrodites, उनके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो इसीलिए एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है दे आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू ऑफस्प्रिंग by sexual reproduction only, ठीक है? ओके, थैंक्स अ लॉट प्रज्ञा, थैंक यू बच्चे. ओके, सो इट्स नॉट अबाउट जीनियस, ठीक है? तो यस, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाता तो आप भी जीनियस हैं, ठीक है? सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग. फाइन. तो इन टॉपिक्स में काफी बच्चों को बहुत बार डाउट्स रहते हैं, उनको ढंग से नहीं समझ आता, तो we'll try our best to understand everything today. Fine. तो आपको करना क्या है, ध्यान से सेशन को सुनना है
एंड बीच में अगर कोई डाउट आता है यू कैन आस्क मी, फाइन. ओके, सो व्हेन यस, नाउ द अदर थिंग इज कि ए सेक्शन में कोई गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते. देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. गैमीट्स का मतलब होता है दीज आर दोज सेल्स, ठीक है, ये वो सेल्स होते हैं विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. फाइन. So no such gametes are there in the asexual reproduction, but sexual reproduction में आपका male and female gamete produce होता है. And thank you so much Pragya. Okay, okay, hi Pooja. Pooja seems very excited today. Great, great. I know बच्चे class got cancelled. ये class 3 बजे होनी थी, but कोई technical issue था जो कि resolve नहीं हो पाया बहुत time तक, तो इसीलिए class को हमने 7 बजे reschedule कर दिया. But yes, we will never let you miss the class. इसलिए we are here to give you the classes. All right. चलिए, so male and female gametes क्या करते हैं? They fuse together and they form a structure which is known as zygote. ठीक है? तो yes, there is the fusion of gametes in sexual reproduction, but ये same चीज जो है आपकी, it is not seen in your asexual reproduction. Fine. Okay. So the next thing is offspring is identical. यहाँ पर बच्चे ओके, ऑफस्प्रिंग सबसे पहले क्या होता है? दैट्स द न्यू ऑर्गेनिज्म व्हिच इज फॉर्म्ड. ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था. तो यहाँ पर ये दिखते हैं एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि मेल एंड फीमेल पेरेंट्स दो अलग अलग इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, उनका फ्यूजन होता है जेनेटिक मटेरियल का, इसलिए वहां पर आता है वेरिएशन. तो यस, ऑफस्प्रिंग्स एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपीज नहीं है, बट यस डेफिनेटली वी गेट सम जीन्स फ्रॉम देम, सम फीचर्स फ्रॉम देम, बट नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू देम. ठीक है, ग्रेट. Okay, the next thing is it takes less time. Asexual reproduction takes less time, whereas sexual reproduction takes comparatively more time. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उतना टाइम नहीं लगता. देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंपैरेटिवली सिंपल, whereas सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आज का हमारा टॉपिक है, एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टुडे. ठीक है, तो यस स्टूडेंट्स, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? दिस इज योर फीमेल पेरेंट एंड दिस वन इज द मेल पेरेंट. ठीक है, तो देखो दोनों अपने अपने गैमीट्स रिलीज करते हैं. द फीमेल गैमीट इज एग and the male gamete is sperm. You all are aware of these terms. I have already told you about them. Now both of these gametes are going to fuse together and this process of fusion is known as fertilization. तो जब ये दोनों gametes दोनों मिलकर fuse करते हैं, इस process को हम क्या कहते हैं? Is faster than sexual reproduction. Absolutely Niranjan, yes, absolutely you are right. ठीक है, asexual reproduction is faster than the sexual reproduction. ठीक है, इसमें कम टाइम लगता है. Absolutely correct. Okay. Yes, बच्चे you are right. What is the meaning of sexual? बच्चे, it is a type of reproduction in which the fusion of the gametes, two different individual के दो अलग अलग cells यहाँ fuse करते हैं. ठीक है, that is sexual reproduction. Fine. Okay, now let's understand कि after fertilization what happens? The embryo is formed. ठीक है, हम आगे की क्लासेस में जब मैं पार्ट 3 या 4 लेके आऊंगी, वहां पर मैं पूरी डेवलपमेंट के प्रोसेस की बात करने वाली हूँ. ठीक है, कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है एंड उसके बाद कैसे जायगोट का डेवलपमेंट होता है. फाइन. तो आज हम पहले जान लेते हैं कि एग्जैक्टली ये जो गैमीट्स है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. सो जस्ट लाइक द अदर ऑर्गन्स इन योर बॉडी, हमारी बॉडी में हार्ट है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लंग्स है रेस्पिरेशन के लिए, एंड वी हैव आवर एलिमेंट्री कैनाल फॉर द डाइजेशन. सो ऑल ऑफ दीज ऑर्गन्स आर परफॉर्मिंग द लाइफ प्रोसेसेस. Similarly, we have these reproductive organs in our body and they are helpful in the process of reproduction. ठीक है, so if I talk about the male reproductive organs, these are a pair of testes first of all. ठीक है,
एंड अगर हम सिंगुलर एक की बात करते हैं, सो दीज आर योर टेस्टीज, कैन यू सी देम, ये बच्चे आपके टेस्टीज हैं. एंड अगर एक की बात करते हैं तो वी जस्ट कॉल देम एज टेस्टिस. Then we have two sperm ducts. So these are the sperm ducts. So testes, what they do? They produce the sperm. Fine. So the function of testes is to produce sperms, which are the male gametes. ठीक है. So ultimately यही male gametes का fusion होने वाला है. So that function of producing the male gametes is of testes. Absolutely. Absolutely, and they are also involved in the production of the hormones, the male hormones, that is testosterone. ठीक है, जो कि आपके reproductive organs को maintain करते हैं, and उनके अंदर you can say testosterone also helps during the changes in the puberty. ठीक है, you have seen there are a lot of physical changes associated with males and females during the puberty. So those are also controlled by these hormones of males and females. So the male hormone is testosterone. Then there is this penis. This is the structure which is ultimately acting as a ejaculatory structure, which is going to ejaculate the male gametes. Obviously those are the sperm. ठीक है, so ये story यहाँ तक थी. And now let's talk about testes. So yes, the testes produce the male gametes, and these are the sperms, and we have millions of sperms which are produced by testes. Fine. Yes. मेंटी स्टार्ट करो. मेंटी स्टार्ट होगी बच्चे. लेट मी फिनिश अप विद द टॉपिक. वी आर डेफिनेटली है फॉर द मेंटी. आई नो आप लोग सारे यहाँ मेंटी के लिए होते हो, बट थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लो. ओके, मार्वलस क्रिकेट वर्ल्ड, व्हाट्स योर नेम बच्चे? ऑलराइट, चलिए बच्चे. द मेल एंड फीमेल gametes come together by the process of copulation. Okay, so we'll be talking about that also. Now let's understand the structure of the sperm, which is the male gamete, and it's very important to understand the structure. So it looks like this tiny worm-like structure. It has three main parts: head, a middle piece, and a tail. ठीक है, तो yes, tail जो है बच्चे ये motility के लिए होता है, यानी कि it helps in the movement. ठीक है, and it helps the sperm to move, and it has a head. हेड के अंदर प्रेजेंट होता है एक एंजाइम. यू कैन नोट इट डाउन समवेयर इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस एंजाइम. दिस इज acrosome enzyme. This is a very very important enzyme because this enzyme helps in the process of fertilization. मैं आपको बताऊंगी. Okay, I will tell you that how this fertilization is going to happen with the help of this acrosome in the further classes. Cool? Okay. Yes, I will write the code in the chat, बच्चे. Wait a second. हाँ जी, absolutely, you are right. Okay. ADK गिटारिस्ट. बच्चे आप लोग अपने नाम से क्यों नहीं आते? ये अतरंगी नाम कहाँ से लाते हो आप लोग? Marvelous cricket world. Okay, and there is this guitarist. Okay, it would be better if you come by your your regular name so that I can also acknowledge you. मुझे याद रह जाएगा, otherwise ये अतरंगी नाम मुझे नहीं याद रहेंगे. Okay, great. चलिए. Yes, this middle piece contains a lot of mitochondria. ठीक है, and these mitochondria are helpful in what? They provide the energy for the movement of the sperm. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी होता है. माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल. ग्रेट. ओके, ग्रेट अंकित. फाइन फाइन. ओके, नो योर नेम कांट बी विराट फॉर श्योर. ठीक है, ये तो तुम मुझे ब्लफ कर रहे हो बच्चे. असली नाम बताओ अपना. ऑलराइट, ठीक है. नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं. तो देयर इज अ पेयर ऑफ ओवरीज. ठीक है, ये आपके these are the ovaries, and these ovaries are helpful in the production of the female gamete, that is the ovum, or you can say the egg. ठीक है, egg भी बोल सकते हैं, ovum भी कह सकते हैं. Now the two fallopian ducts are there. These are the tube-like structures जो आपकी ओवरी से अटैच होते हैं, and जैसे ही यहाँ पर egg release होगा,
So it will travel down through your fallopian duct and then it will come in this part. This is known as बच्चे uterus. It's an inverted pear like structure, ठीक है, या inverted triangle भी आप लोग कह सकते हो. This is the structure, this is the uterus, and here the implantation occurs where the future baby is going to be born. ठीक है, हम इन सारी बातों के बारे में डिटेल में आगे के मतलब जब भी हम क्लासेस लेंगे तो वहां पर मैं एग्जैक्टली बताऊंगी कि एग्जैक्टली हाउ द डेवलपमेंट इज गोइंग टू हैपन. Fine, and this particular part, this is a canal like structure and this is known as cervix. Fine, through which the sperm comes and travels and the sperm comes here in the fallopian tube और यहीं पर जाके आपका egg और sperm जो है वो दोनों meet करते हैं and the process of fertilization occurs here. ठीक है, cool. I'm great, Pragya. I'm great. Absolutely. Fallopian duct is also known as oviduct. Very nice. So it's already mentioned here. ठीक है, oviduct को ही हम fallopian tube कहते हैं. Fine. अच्छा, इंग्लिश में बात नहीं करूं. Okay. So बच्चे, I have to talk in both हिंदी and English so that everybody can understand. तो मैं इंग्लिश में भी बात कर रही हूँ, हिंदी में भी कर रही हूँ ताकि आपको सबको समझ में आ जाए. ठीक है, तो किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होगा. So those who can understand Hindi, great. Those who cannot understand Hindi and want me to talk in English, उनके लिए भी सही है. ठीक है, great. दोनों लैंग्वेजेस यूज करते हैं. फाइन. ओके, ग्रेट. नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी वो था ओवरी, बिकॉज इट इज हेल्पिंग इन द रिलीज ऑफ द फीमेल गैमेट. जो फीमेल गैमेट है दैट इज एग एंड वो इसी ओवरी से रिलीज होता है. एंड इन ह्यूमन बीइंग्स, बच्चे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक सिंगल एग इज रिलीज. ठीक है, जहां हमने देखा था मेल गैमेट जो होते हैं वो मिलियंस में रिलीज होते हैं एट अ टाइम, बट in the females only one egg is released in a month. ठीक है, and it is happening alternatively. So it is like one ovary is releasing one egg every month. Fine. And uterus is the part where the development of the baby takes place. ये मैंने अभी आपको बताया ही था. Fine, cool है. So this is the diagram of your human ovum. So this is how it looks like. स्पर्म का स्ट्रक्चर हम लोग समझ चुके हैं एंड ओवम के स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल सेल एंड इट हैज अ न्यूक्लियस इन बिटवीन. फाइन, ग्रेट. चलिए, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. तो सभी को आई थिंक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझ आ गया अच्छे से एंड आई थिंक यू ऑल आर वेटिंग फॉर द मेंटी नाउ, जिसके लिए आप लोग आते हो यहाँ पर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेंटीज. आई विल नॉट मेक यू वेट फॉर वेरी लॉन्ग. All right, so here's the code for the mentee and the code is 55816888. जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. No doubt, that's great, Rajan, that's great. What is throat? Throat is बच्चे this your neck region के अंदर जो आपका ये गला होता है basically, that's throat. Okay, fine. All right, चलिए. It's the passage between your buccal cavity and the esophagus. उस जो पॉइंट को जो कनेक्ट कर रहा है that is the throat. So I hope you all have understood, है ना? ठीक है, सबको समझ आ गया ना? So now अभी आप लोग मेंटी में मचा देना अच्छे से. ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस जो है इसी सेशन से होने वाले हैं. तो आई होप आप सभी जो है अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं. ऑलराइट, तो आई वांट जल्दी से मेंटी में बच्चे ज्वाइन हो जाए फटाफट से. सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स. तो ये चैट बॉक्स वाले बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन करो. बच्चे, आशिमा, द कोड इज 55816888. फाइन, 55816888. दैट्स द कोड. ग्रेट. चलिए, ओके. तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे ऑलरेडी सारे आ चुके हैं यहाँ पर विद सच क्यूट क्यूट आइकन्स ऑलरेडी हियर. ओके, द एलियन इज हियर, फिश भी आ गई है, सैंटा भी आ गया है. ओके, क्रिसमस से पहले ही सैंटा आ गया है. ऑलराइट, बर्थडे केक इज हियर, लायन इज आल्सो हियर, टाइगर भी आ गए, जूता भी आ गया है किसी का. ये किसका जूता रह गया यहाँ पे? Whose shoe is left here? Okay, great.
Shall we start with it now? Okay, Rose is here. Rose कौन है? Rajan. Great, great. Alright, so shall we start with the Menti now? Okay, great. I'm starting with the questions. So the first question is here in front of you, and it says that the ova or ovaries belongs to which reproductive system? जो ओवा है और ओवरीज है वो कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बिलोंग करते हैं? दैट यू हैव टू टेल. बताइए, इज इट फ्रॉम द मेल, फीमेल या बोथ या नन ऑफ दीज? बहुत ही आसान सा सवाल है ये वाला, ठीक है? और जल्दी जल्दी आंसर देना है. द फास्टर यू आंसर द मोर पॉइंट्स यू गेट. ओके, चलिए. ओके, हाय रामेश्वर. बच्चे कैसे हो आप? इज इट रामेश्वर और नागेश्वर? ग्रेट ग्रेट, ठीक है. ग्रेट, कूल बच्चे, कूल. I got it. I got it. Alright, so the time is up now and the correct answer is female. Obviously, it's female. अब भी इतने अच्छे से समझाया आप लोगों को पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने फीमेल्स का ना, तो ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए था. ये नन ऑफ दीज और मेल वाले बच्चे कौन है जरा मुझे बता दीजिए आप लोग. एंड कोई किसी ने बोथ भी मार्क किया है. Why you people do this? तभी बोलते हो ध्यान से पढ़ लिया करो पहले, उसके बाद ही मेंटी पहले आते हैं, मेंटी चलाना स्टार्ट हो जाते हैं सारे, है ना? तो नेक्स्ट टाइम पहले क्लास को अच्छे से अटेंड करो, ठीक है? उसके बाद ही. ओके, ग्रेट. So Arshia is here. Arshia is back in form and she is leading the board right now. How to join Menti? Ankit, बच्चे जल्दी से जाओ www.menti.com टाइप करो, ठीक है, गूगल पे जाके, एंड यू विल बी ऑन द मेंटी साइट. वहां पर जाके आपको ये कोड यूज करना है 55816888. दिस इज हाउ यू विल ज्वाइन द मेंटी. ओके बच्चे, और जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन दिस मेंटी टुडे. ग्रेट, वेरी नाइस अर्शिया. अर्शिया डिड इट इन जस्ट 0 seconds. देख रहे हो बच्चे आप लोग, जल्दी जल्दी करिए फटाफट से. कंपटीशन टफ हो चुका है यहाँ पे. ABCD में तो आंसर है ही, ऑब्वियसली ABCD में से ही कुछ है, ठीक है बच्चे? जल्दी जल्दी बता दो क्या है. ओके, द मेल गैमीट इज व्हाट? एंड द टाइम इज अप. द मेल गैमीट बताना था. एक ग्लैंस और पीनिस जिसने भी मार्क किया बच्चे, वेयर आर यू लॉस्ट? मेल गैमीट्स आर स्पर्म्स, ठीक है? आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल एवरीथिंग अबाउट इट. ऑलराइट, चलिए लेट्स सी कौन है अभी लीडर बोर्ड पे. अर्शिया इज अगेन ऑन द लीडर बोर्ड. सो वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. आज के जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं वो चल रहे हैं अभी. अर्शिया, शौर्या, खुशी, अमृत एंड दिस AD के गिटारिस्ट. आई डोंट नो हु इज ही. अपना नाम भी बता दीजिए गिटारिस्ट जी. ओके, ग्रेट. एंड हिमांशी, कीर्ति, रामेश्वर इज सो फ्रस्ट्रेटेड विद कोरोना. इसने नाम ही लिख दिया, कोरोना तो कब जाएगा. ग्रेट. एंड मधुसूदन, आदित्य, ठीक है? चलिए, so tough competition going on between all the students and as you all know it's a mini menti. तो आपको सिर्फ 5 questions मिलते हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए. इन्हीं 5 questions में कर डालो, बचा डालो जल्दी से. Sperm cells are produced in where? Where are sperm cells produced? Yes, Anvesha. Code, बच्चे the code is 55816888. जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो फटाफट से. Don't waste much time. 55816888. That's the code बच्चे. Doubt clear? Nice, nice Pragya. That's nice. Hanji, this one is very easy. I know it's a very easy question, Tanu. So sperm cells are produced in where, bachche? Yes. Something is wrong with the leaderboard. How, bachche? Why is it wrong? Leaderboard is fine. Great. Misclick हो गया. अरे बच्चे misclick मत करो यार, ठीक है? So yes, that's testes. Okay, so testes is the correct answer. Sperm cells testes से ही produce होते हैं, अभी explain किया था. चलिए, now let's see
कौन है लीडर बोर्ड पे? प्रतीक, तमसा मैम फैन, ओके ग्रेट। तो फैन एसी सब आ रहे हैं यहाँ पे मेरे। नाइस, शौर्या ने बाजी मार ली है एंड शौर्या आ चुकी है लीडर बोर्ड पे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है एंड द फोर्थ क्वेश्चन सेज यू ऑल मस्कुलर ऑर्गन वेयर अ बेबी डेवलप्स। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू दिस, अभी एक्सप्लेन किया है। जल्दी से आंसर दे दो फटाफट से, जितनी जल्दी आंसर दोगे उतनी जल्दी जल्दी तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। ग्रेट, यस Akansha, the code is 5581688. Anvesha, sorry, not Akansha. Okay, Anvesha. All right. 5581688. बच्चे ऊपर लिखा हुआ है टॉप पे ना, यू कैन ऑल्सो सी देयर, एकदम टॉप पे देखो स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है 5581688. You can always have a look there and see the code. Okay. Great. So the correct answer is uterus. So uterus is that muscular organ where the baby develops inside the female. ठीक है, चलिए. So let's see. अभी फोर्थ क्वेश्चन तक लीडर बोर्ड पे शौर्य चल रहे हैं बच्चे, ठीक है. और ये आ चुका है लास्ट क्वेश्चन, एकदम फाइनल वाला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. हाँ, तो इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर मार्क्स, ये आपके लिए एक लास्ट चॉइस है, लास्ट चांस है. द रिलीज ऑफ अ मैच्योर एग इज कॉल्ड. जब मैच्योर एग रिलीज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज, ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन. व्हाट डू वी कॉल इट? ग्रेट. चलिए, ये कौन है जो अपनी तारीफें किया जा रहा है? आई एम अमेजिंग. अच्छा, हालचाल पूछ रहे हैं बच्चे आपस में. नाइस. चलिए बच्चे, यहाँ पर भी आंसर कर दो, फिर हालचाल पूछते रहना. ग्रेट. ओके, सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद आई थिंक जस्ट 5 seconds नाउ. ठीक है, एंड 3, 2, 1 द टाइम इज अप. ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग वाला था, ठीक है. आई नो, हर चीज तो स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी ना, तो कुछ कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा. तो यस बच्चे, जब एक मेच्योर एग रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं. ठीक है, ये मैंने आपको इसीलिए नहीं समझाया था बिकॉज आई वांटेड टू सी कि कितना नॉलेज है आपके दिमाग में, कितना दिमाग चला लेते हैं आप लोग. ठीक है, सो यस, नाउ यू कैन always remember this thing. The process of releasing of a mature egg from the ovary is known as ovulation. ठीक है, चलिए. So that was all for today's mentee. Samrat, nobody is ignoring you बच्चे. Why would somebody ignore you? Yes, Samrat. Do you want to say something? कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं आप? Okay, congratulations, Shaurya. You did great बच्चे. So आज की मेंटी में तो बाजी मार ली है शौर्या ने. Congratulations. Alright students, so आज के सेशन में केवल इतना ही था. ठीक है, आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं मैं 1 by 1 कवर करने वाली हूँ, तो आप लोग सेशंस मिस नहीं करोगे. टेलीग्राम ग्रुप पे यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस. अगर अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके अभी ग्रुप ज्वाइन करो. ठीक है, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना. शेयरिंग इज केयरिंग. ठीक है, खुद नहीं पढ़ाई करनी, फ्रेंड्स को भी हेल्प करना है. ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम आस्क ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स टू कम एंड जॉइन द मेंटी, जॉइन द सेशन. यू विल योरसेल्फ आल्सो हैव फन. ओके, ग्रेट. एंड साइंस एंड मैथ्स के बच्चे स्पेशल कोर्सेज चल रहे हैं. अगर नहीं ज्वाइन किया है तो गोप्रेप का ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कीजिए. एंड is the great courses going on, so it's a revision course for all of the subjects. अगर आप यूज करते हैं ये गोप्रेप YT नाम का कोड तो मिलता है एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट. और क्या चाहिए जिंदगी में, डिस्काउंट पर डिस्काउंट मिल रहा है. Okay, and the quadrilateral chapter is coming as a mini course for you all, and it's just for ₹99 as you all are aware. So this is going to be taken by Ankit sir for sure. So it started,
इट्स नॉट स्टार्टिंग, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड. तो ये स्टार्ट हो चुका है. अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, यू स्टिल हैव टाइम टू ग्रैब ऑन दिस अपॉर्चुनिटी एंड लर्न दिस एंटायर चैप्टर. सो डोंट मिस दिस आउट. और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में इसी धमाल के साथ इसी तरह मचाएंगे और अपने सारे सब्जेक्ट्स को, सारे सिलेबस को खत्म कर देंगे. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स. एंड जो लोग नए हैं एकदम, जिनको पता ही नहीं कि चल क्या रहा है भाई, तो यस, उन लोगों को मैं बता दूं, हमारा गोप्रेप का ये एक ऐप है. इट्स लाइव लर्निंग ऐप, गूगल प्ले के ऊपर अभी जाके डाउनलोड करो. ठीक है, have the experience of all the live classes going on here. You will definitely understand what's happening and you will be for sure helping you out. आप खुद की ही मदद करेंगे इस तरह से अपनी पढ़ाई में by downloading this app. ठीक है, तो yes, do not forget to subscribe the channel if you haven't, like the video, share the video and hit the bell icon. अगर आपको चाहिए timely notifications and you do not want to miss out any of the notifications from the Goprep app and yes, from this channel for grade 8. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, and it's a last goodbye from my side. मिलते हैं अगली क्लास में. Till then, all of you take care, stay safe and bye bye.